Hello and welcome to this new tutorial. This tutorial is about concept of negative and positive liberty, and in this tutorial I will talk about first the concept of negative liberty. आप सबका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में और हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और टू मेक इट मोर इजी फर्स्ट मैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी लूँगा और आने वाले दूसरे ट्यूटोरियल में मैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी को कवर करूँगा. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी. Now, before we begin with the concept of negative liberty, let us just understand the first meaning of liberty. And liberty stands for the absence of restraint. Restraint माने measures और condition, और हिंदी में कहे तो नियंत्रित करना. मतलब liberty is the absence of any restraint or measures or any conditions और control रखना. मतलब liberty is all about freedom. Liberty is all about certain amount of freedom which is granted to every individual by the state. Now moving on to the what is negative liberty. Well, negative liberty is when the state should not impose any restraint or impose minimum restraint on the actions of the individual. Very simple. Now when we talk about negative liberty, we are talking about basically that state would not impose any restraint. That means state will give you immense liberty, state will give you immense freedom, or sometime state will impose minimum restraint, minimum conditions, minimum measures और नियंत्रित करना. बेसिकली आपकी जो एक्शन रहेगी, जो इंडिविजुअल की एक्शन रहेगी, उसको कंट्रोल करना, वो भी मिनिमम रिस्ट्रेंट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट नेगेटिव लिबर्टी स्टैंड फॉर, एंड दिस व्यू इज कॉल्ड negative view of liberty. That means state would not impose any restriction on your action, or sometimes state will impose only minimum restraint. बहुत कम नियंत्रित करेंगे आपकी एक्शंस. और ये क्यों करना चाहिए? मतलब you cannot allow men to just do everything without any conditions, and if we allow men to do anything without any conditions, then we'll have a big problems of people who are in minority, people who are weak. They will never be able to protect themselves, and therefore the entire situation would be like survival is the fittest. मतलब जो कोई strong रहेगा वो survive करेगा, और जो ज़्यादा strong रहेगा वो हमेशा जो weaker section रहेगा, जो weak इंसान रहेगा, उसके ऊपर जुल्म उठाते रहेगा. और इसीलिए कभी कभी स्टेट को minimum restraint, minimum measures or condition has to be imposed on the actions of individual, and that is what basically negative view of liberty is all about. Well, this view was prominent during the 17th and 18th century of Europe. मतलब ये जो view है of liberty, negative view of liberty, that is the state will impose very minimum restriction, or sometimes state would not impose any restriction on the actions of individual. ये जो view था, ये जो understanding था, वो prominent था 17 और 18 सेंचुरी में, स्पेशली इन यूरोप. और उस ज़माने में ये जो व्यू है नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी, दे एडवोकेटेड बाय द मिडिल क्लास विच डिमांडेड अ फ्री मार्केट सोसाइटी अगेंस्ट द मर्केंटाइल पॉलिसी ऑफ द स्टेट. मतलब उस ज़माने में जो 17 और 18 सेंचुरी का जो फेज़ है यूरोप का, यूरोप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज हाईली डोमिनेटेड बाय लॉट ऑफ मर्केंटाइल पीपल और मर्केंटाइल इंडस्ट्री. लॉट ऑफ बिजनेस वाज कैरी आउट देयर, लॉट ऑफ मार्केट वाज built. In fact, world biggest market of that time was Venice, which was controlled by a lot of these great mercantile people, and therefore the middle class of the society of Europe, they advocated and they demanded that there should be a free market society against especially of that mercantile policy of the state. और इसीलिए
इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए स्टेट ने बहुत सी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की थी, एंड दिस वाज मोर सपोर्टिंग ओनली टू दैट क्लास ऑफ पीपल हु वाज मोर इनटू मर्केंटाइल इंडस्ट्री, हु वाज मोर इनटू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और इसी की वजह से जो मिडिल क्लास लोग थे यूरोप के, उनको बहुत सी परेशानी फेस करनी पड़ी थी। और इसीलिए मिडिल क्लास लोगों ने 17 और 18 शताब्दी में, सेंचुरी में, दे स्टार्टेड डिमांडिंग दैट स्टेट शुड डिक्लेयर फ्री मार्केट सोसाइटी, मतलब हर एक इंसान को थोड़ा कुछ इंडिपेंडेंस देना चाहिए, थोड़ा कुछ फ्रीडम देना चाहिए, थोड़ा कुछ लिबर्टी देनी चाहिए, so that they can carry out their own economic activities as well, basically to support and basically to protect the middle class population or middle class societies of 17th and 18th century of Europe. So this was the first very important reason, or I would say the cause for developing the negative liberty concept. Moving on, there was also demand was made that the state should not interfere in the economic activities of the individual. The second very important demand of same middle class people during the 17th and 18th century was that state should not interfere much into the economic activities of the individual. State should just be a facilitator of the policy. State should be there to protect the individual. Leave entire economic activities of the individual to individual himself. Let him or let her involve himself or herself into the economic activities of the people, because end of the day state will never going to understand the economic aspects of individual. But if a businessman, he would know how the market will function, how would demand and supply would change the entire policy of the society or a market for that matter. And therefore there was a huge demand that state should not interfere and state should leave the economic activity of the society or a state to the individual, because individual who are there in the market, who are there into business, they would know everything about their business. They would know which product will have a big say in next couple of months or a couple of days, which product will eventually will lose the market. So if you leave it on the individual, they will be in the best position to take care of the economic activities. दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था 17th और 18th सेंचुरी यूरोप में, जब नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो दूसरा था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है स्टेट की, उसमें स्टेट ने कभी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब स्टेट ने इंटरफेयर तो करना ही नहीं चाहिए। दे हैव टू लिव इट ऑन द इंडिविजुअल। मतलब जो व्यापारी लोग रहते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें पता है कि मार्केट कैसा फंक्शन करती है, कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना डिमांड आएगा, कौन सा प्रोडक्ट अभी डिमांड में नहीं आएगा, और कैसे कैसे लोग मार्केट में एंट्री करेंगे। ये सब जो इंसान, जो व्यापारी वहाँ पे जिसने अपना पूरा जीवन दिया होगा, at least the one who has an experience of 5, 10, 15 years into the market, they would exactly going to understand। उनको पता होगा कि मार्केट जो है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है मार्केट में कैसे रिएक्ट करेगी। और अगर स्टेट इंटरफेयर करने लगा डायरेक्टली, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वुड बी हैम्पर्ड। और इसीलिए ये दूसरा डिमांड था under the so-called negative liberty in 17th and 18th century, that state should not interfere in economic activities of the individual, and state should only be as a facilitator or as a protector, just to keep a watch on the market. Moving ahead, it was also contended that in such an atmosphere, the interaction between the self-interest of the each individual would result in the promotion of the good of the society as a whole. And therefore there was also believed that if state does not interfere in the economic activities of the individual, then individual would be in such condition, in such atmosphere, would exactly know how the interaction takes place when it comes to promotion of goods. As I said again, if
every businessman, if every individual knows his business very well, then every individual will try his or her best to promote the goods. And when the promotion of goods takes place in the market without state interference, it eventually going to benefit society as a whole. That means market will develop, market will grow, more import and export will be carried out only if the individual who are in the economic activities of the state are left alone with their own expertise, and only if state does not interfere. तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है कि बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि जो एटमॉस्फेयर है मार्केट का, जो एटमॉस्फेयर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वहाँ पे बेसिकली इंटरेक्शन होता है, और जो इंटरेक्शन जो होता है वो एक व्यापारी और उसका कस्टमर के बीच में होता है। और अगर जो व्यापारी वहाँ पर है उसको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा बिहेव करेगा, कौन सा कस्टमर कैसा रिएक्ट करेगा, सो हर एक जो व्यापारी होता है वो अपना जो गुड्स है उसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश करता है। हर एक व्यापारी का एक ही मुद्दा होता है कि जो उसका माल है वो ख़त्म हो जाए, उसको और ज़्यादा माल उसने लाना है और ज़्यादा माल उसको बिकवाना है। सो एवरी व्यापारी, एवरी ट्रेडर, एवरी businessman will always trying their best to promote the goods, basically the promotion of goods। और जब ये इंटरेक्शन होगा एक व्यापारी और कस्टमर के बीच, अंत में इट विल बेनिफिट एंटायर सोसाइटी एज अ होल। मतलब बेसिकली यही कहना है कि अगर मार्केट आप व्यापारी को हाथ में देंगे तो व्यापारी उस मार्केट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा उसको एक्सपांड करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ एंड ऑफ द डे द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट विल इम्प्रूव, द लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल विल इम्प्रूव, एंड इवेंचुअली इट विल बेनिफिट द सोसाइटी एज अ whole। And therefore we need to understand, because liberty consists in the freedom of trade, freedom of enterprises, freedom of contract, and a free competition of the market forces of supplies and demand। And therefore we need to understand that when you give them a liberty, when you give them that immense freedom, or you impose less restriction on the action of the individual in the market, eventually it will benefit them in the freedom of trade, freedom of enterprises, freedom of contract, and a free competition market, which actually a very important necessary market force of supply and demand। हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति तैयार होती है जहाँ पर स्टेट बहुत मिनिमम रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है मार्केट में, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट का इंटरफेरेंस एकदम मिनिमम है, तो उस सिचुएशन में जो व्यापारी को, जो ट्रेडर्स को या जो बिजनेसमैन को एक लिबर्टी मिलेगी, वो लिबर्टी अंत में उसको बेनिफिट करेगी उसके ट्रेड में, उसके एंटरप्राइजेस में, एज वेल एज उसके कॉन्ट्रैक्ट में। और because there is a freedom among the trade and enterprises and a contract, there would be a free competition। और जब competition बढ़ेगा मार्केट में, so definitely स्वाभाविक है कि वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई होगा और ज़्यादा डिमांड भी क्रिएट करेंगे। और therefore and thus state was considered as a necessary evil which was required only to maintain liberty by protecting the persons and property of individual from onslaught from others, and not to interfere with their natural liberty। And therefore we need to understand that state is necessary evil only to maintain liberty and to protect the person and his property in the market or his property in the society। और अंत में हमें ये समझना चाहिए कि स्टेट का जो रोल रहेगा इस सारे सिचुएशन में, वो स्टेट का रोल थोड़ा लिमिटेड रहेगा। यहाँ पर स्टेट सिर्फ एक लिबर्टी को मेंटेन करेगी और सबको प्रोटेक्शन देगी, उसके माल का, उसके प्रॉपर्टी का और उसके खुद का
प्रोटेक्शन, उसके खुद की लाइफ की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी। और जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ऑब्वियसली इट विल बेनिफिट एवरीबडी, traders especially, and the so-called other businessmen, and that will create a free competition, and a market forces of supply and demand would be huge, and therefore there would be huge demand and supply for the goods। और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जो स्टेट का जो रोल रहेगा यहाँ पर, वो सिर्फ आपको लिबर्टी देगी और आपको प्रोटेक्ट करेगी, and that should be the what understanding of negative liberty। So following are the great thinkers who contributed to the concept of negative liberty, and these are Hobbes, Locke, Jefferson, Burke, Paine, Adam Smith, Bentham, Spencer and J.S. Mill। सो ये सारे लोग, ये सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये लोग हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। और आज के तारीख में ये जो नेगेटिव लिबर्टी है, इसका एक शब्द में उसको एक्सप्लेन करूँ तो दिस इज़ नथिंग बट लिबरलिज्म। सो टू समराइज, नेगेटिव लिबर्टी basically talks about that state would not impose any restriction, and in case if state has to import some restriction, then it would be minimum restraint or a condition on the action of the individual। ये जो नेगेटिव लिबर्टी था वो ज़्यादातर फेमस रहा 17 और 18 सेंचुरी में, स्पेशली इन यूरोप। और यूरोप में क्यों बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि देयर शुड बी अ फ्री मार्केट सोसाइटी, और स्टेट को अपनी जो पॉलिसीज़ थी, मर्केंटाइल पॉलिसीज़ थी, ट्रेडिंग पॉलिसीज़ थी, वो थोड़ी चेंज करनी पड़ी, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज डिमांड बाय द मिडिल क्लास पॉपुलेशन फ्रॉम द यूरोप। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस या मिनिमम इंटरेक्शन हो एज फार एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल इज़ कंसर्न, मतलब इंडिविजुअल के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, तभी एक इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट के लिए नए नए आइडियाज़ को विकसित करेगा। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वो इंटरेक्शन बढ़ेगा उस फ्री इकोनॉमी में, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो उससे डायरेक्टली जो गुड्स है वो प्रमोट रहेंगे, और गुड्स प्रमोशन होने के कारण अंत में सोसाइटी को ही बहुत फ़ायदा होगा, सारी सोसाइटी को ही बहुत फ़ायदा होगा। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेगेटिव लिबर्टी इज़ दैट इवेंचुअली दिस विल क्रिएट अ बिग environment, a happy environment for all the traders, all the enterprises, especially for their contract, and this eventually will lead to free competition। और जब फ्री कंपटीशन बढ़ेगा तभी मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, और अंत में स्टेट का जो रोल रहेगा वो सिर्फ लिबर्टी को मेंटेन और प्रोटेक्ट करने के लिए, एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, पर्सन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ individual। So this is all about the concept of negative liberty। So feel free to comment in the comment box below, और दूसरे ट्यूटोरियल में we will talk about the concept of positive liberty। Till then, take care।